स्टूडेंट दिस एक्सरसाइज डील्स विद द फ्रस्टम। इस एक्सरसाइज में हम फ्रस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन of height 14 centimeter. The diameter of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. स्टूडेंट एक ग्लास है जो फ्रस्टम शेप का है, उसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर और उसके बोथ एंड्स के डायमीटर यानी बिगर एंड का डायमीटर 4 सेंटीमीटर और स्मॉलर का 2 सेंटीमीटर है और उसकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम निकालना है। सी दिस इज द फ्रस्टम ऑफ ग्लास, दिस इज ग्लास ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर. Now this diameter is 4 centimeter and this is 2 centimeter. So height of the glass, that is frustum, h is equal to 14 centimeter. And the radius of upper end, that is r1, is equal to 4 upon 2 centimeter. Diameter का half. And radius of lower end, that is r2, is equal to 2 by 2, 1 centimeter. Now volume of glass is equal to कितना formula होगा student frustum का, that is 1 by 3 pi h bracket r1 square plus r2 square plus r1 into r2 bracket close. स्टूडेंट यहाँ h r1 r2 की वैल्यू पुट कीजिए. सो 1 by 3 into 22 by 7 is pi into 14 bracket 2 square plus 1 square plus 2 into 1. So that will become 7 से आप 14 को डिवाइड करेंगे. 7 में 7, 7 2 14 and 2 into 22 will become 44 upon 3. ब्रैकेट में 2 square is 4, 1 square is 1 and 2 into 1 is 2. So that will become 44 into 7 upon 3 and calculation के बाद that is 308 upon 3, that is 102 2 by 3 centimeter cube. So this is your volume of glass.